Now we have variety of motors, and those are AC motor, DC motor, stepper, and servo motors. First one we have DC motor. So as the name is, it's a direct current powered motor. They can run in both direction. स्पीड जो है कंट्रोलेबल होती है इनकी. करेक्टरिस्टिक्स जो है हाई स्पीड लो टॉर्क डिवाइसेस हैं ये. गियर्स यूज होते हैं एंड हाई स्पीड फॉर द मोटर इज ट्रेडेड ऑफ इनटू टॉर्क. डीसी मोटर ड्राइवर्स जो हैं, these are current amplifying circuits, and low current control signal is converted into a proportionally higher current signal that can drive the motor. The servo mechanism for AC and DC motor drives precision equipments in angular increments, and the servo components are change position or speed of mechanical objects. जो सर्वो मोटर्स हैं, दे हैव अ प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटरी मोशंस, जिनमें कि सिंक्रोनस और स्टीपर मोटर आते हैं. एंड फॉर द एसी सिंक्रोनस मोटर, rotor is a permanent magnet, can reverse direction or stop quickly. Current drawn in the same when stalled as when operating, and speed proportional to AC frequency and number of pairs of stator poles.